नमस्कार दोस्तों, सुरेश कुमार देवांगन एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत है। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस। ये जो सीरीज है, ये मैं 9 सीरीज आपके सामने लेके आने वाला हूँ। हर बार 20 प्रश्न, मतलब 180 क्वेश्चन। हमारे साथीगण प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल की तैयारी में लगे हुए हैं। उसी तैयारी को बल देने के लिए ये मैं प्रश्न लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आप इसे टेस्ट सीरीज समझे और प्रतिदिन अभ्यास करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया रिफर्ड टू इन डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में ये मौजूद है? तो आंसर है ए 266 सेकेंड, इसमें ये मौजूद है। देखो दोस्तों, प्रश्न का उत्तर नीचे दिया हुआ है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दिया हुआ है। प्रश्न 2 की बात करें, सेंट्रल सर्विसेज मेडिकल अटेंडेंस रूल अप्लाई टू, किसको अप्लाई करता है? द आंसर इज रेलवे एम्प्लॉइज ऑन डेपुटेशन टू एन ऑफिस अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर से बोल दूं, रेलवे एम्प्लॉइज ऑन डेपुटेशन टू एन ऑफिस अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। ये इसका उत्तर है, आप इसे नोट कर लें। प्रश्न क्रमांक 3 की ओर बात करते हैं। इसका मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन बता दूं। सीएस मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, एमए मेडिकल अटेंडेंस रूल apply to rule 1, all central government when they are on leave, they are on duty, or they are on leave, leave preparatory to retirement and terminal rule or foreign service in India are when under suspension. Railway employees and state government servants who are on deputation to an office under the central government. Government pensioner re-employed under the central government. Professionals. Apprentices in whole time service of the government. These rules do not apply to, ध्यान से सुनिए, these rules do not apply to डिफेंस सर्विस पर्सनल, डेपुटेशन अब्रॉड, रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट। इन 3 पे ये लागू नहीं। प्रश्न क्रमांक 3 की ओर बढ़ते हैं। आज हमने 20 प्रश्न लिए। उम्मीद है दोस्तों आपको ये 20 प्रश्न पसंद आएंगे। डेली अलाउंसेस इज पेड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ डेज ऑफ ऑप्शन फ्रॉम हेडक्वार्टर। देखिए, जो डेली अलाउंसेस हैं वो आपको 30 दिन, 75 दिन, 60 दिन या 130 दिन, 180 दिन किसके लिए पे किए जाते हैं? तो इसका उत्तर है 180 दिन के लिए। फॉर 6 months इट इज पेड एंड आफ्टर दैट इट विल रिमेन changed. If an order of suspension made or deemed to have been made is not reviewed before expiry of 90 days, can it be valid? No, it is not valid then. The answer is no. I hope it is clear to you all, friends. तो हम अब आगे बढ़ते हैं। If a government servant had committed a misconduct during his earlier employment, what actions would be taken against him in his present employment? मतलब उसे डेपुटेशन में भेजा गया है, उसने प्रीवियस कंपनी में, प्रीवियस इंस्टीट्यूशन में कोई गलती की है, उसे क्या किया जाना चाहिए? should be warned, rendered him unfit and unsuitable for the continual service in the progress, salary should be withheld for a specific period, can be awarded penalty. And the right answer is B.
render him unfit and unsuitable for continual in service. प्रश्न क्रमांक 6 की ओर बढ़ते हैं. The rate of subsistence allowance for the period of first 3 months of suspension is. यदि कोई कर्मचारी सस्पेंड हो जाता है तो उसे 50% पे दिया जाता है. 50% of the pay is given to him. Clarification about the subsistence allowance. For the first 3, दोस्तों मैंने क्लेरिफिकेशन भी इसलिए दिया है ताकि आप यदि पढ़ना चाहें आप उसे बहुत अच्छे से पढ़ सके. For the first 3 months, salary for half pay leave, that is 50% of pay. After 3 months, if the delay is not attributed, ध्यान से सुनना, if the delay is not attributable to the employee, allowance may be increased by up to 50%, that is 75%. After 3 months, if the delay is attributable to the employee, allowance may be reduced by 50%. That is 25% of the pay. प्रश्न क्रमांक 7 की ओर बढ़ते हैं. The rate of subsistence allowance is prescribed in FR फाइनेंशियल रूल. FR 53 है, 54 है, 10 है कि 56 है. मैंने क्या किया है, ये 53, 54, 55, 56, 57 इस सारे रूल को मैंने एक्सप्लेन किया. इसका उत्तर है फाइनेंशियल रूल 53. आगे जाके आप देखेंगे. ये देखिए 52 क्या है. The pay and allowances of a government servant who is dismissed or removed from the service ceased means stopped from the date of such dismissal or removed. ये 52 कहता है. 53 क्या कहता है, subsistence allowance is prescribed for suspended employee. ये रूल 53 कहता है. 54 कहता है when a government servant who has been dismissed, removed or compulsorily retired is retired as result of the appeal or review. 55 कहता है leave may not be granted to a government servant under suspension. I hope it is clear to you. प्रश्न क्रमांक 8 की ओर आगे बढ़ते हैं. Prior permission sanction is necessary for joining an educational institution out of office or joining samyukta सदाचार समिति, undertaking social or charitable work, participating in sports as an amateur. तो जो हमें परमिसिबल है वो है A, joining an educational institution outside office. We need to get permission for that. According to the DES guideline, the Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013 enacted. यहाँ पे हम गलती कर जाएंगे. इसका उत्तर हम निश्चित रूप से गलत लिखेंगे और हम डी लिख देंगे, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, जबकि इसका उत्तर है ए, विशाखा. अब ये विशाखा क्या है मैं आपको डिटेल से बताता हूँ. इन 1992 a rural level change agent Bhavri Devi was engaged by the state of Rajasthan as a Sathin to work towards the prevention of the practice of child marriage. During the course of her work, she prevented the marriage of a ध्यान से सुनिए दोस्तों, 1-year-old girl in the community. Her work was met with the resentment and attracted harassment from men of that community. Bhavri Devi reported this to the local authority, but not action was taken. That omission came at great cost. Bhavri was subsequently gang raped by those very men. Based on the fact of Bhavri Devi's case, a public interest legislation PIL, जिसे हम PIL कहते हैं, PIL was filed by Visakha, ध्यान से सुनो, filed by Visakha and other women groups against the state of Rajasthan and Union of India before the Supreme Court of India. It proposed that sexual harassment be recognized as a violation of women's fundamental right to equality and
that all workplace establishment institution be made accountable and responsible to upload these rights. इसीलिए इसका नाम विशाखा रखा गया। आई होप इट इज अंडरस्टूड टू यू। प्रश्न क्रमांक 10 की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर फिलिंग अ सेक्सुअल हैरेसमेंट कंप्लेंट? 3 महीने के अंदर इसको कर लेना है, विद इन 3 months ऑफ द इंसिडेंट। आई होप इट इज क्लियर। विद इन 3 months of the incident, in case of series of incident, 3 months of the last incident. Whether LTC is admissible for journey during weekend holidays without any leave? No. Admissible? Admissible in exceptional case, admissible subject to condition, not admissible. तो पूरा पूरा आंसर है नॉट एडमिसिबल। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। एडमिसिबिलिटी ऑफ लीव ट्रेवल कंसेशन। दोस्तों ये मैं शेयर करना चाहूंगा आपसे। द लीव ट्रेवल कंसेशन शैल बी एडमिसिबल to persons if they have completed 1 year of continuous service under the central government on the date of journey performed by him or his family, as the case may be, to avail of the concession. The leave table concession shall be admissible during any period of leave, including casual leave and special leave. Cannot be availed on during closing holidays only without taking any leave. उम्मीद है आपको क्लियर होगा। 8 और प्रश्न बाकी है दोस्तों। व्हाट इज द टाइम लिमिट फिक्स्ड टू क्लेम रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड अंडर एलटीसी व्हेन नो एडवांस इज ड्रॉन? जब एडवांस आपने नहीं लिया है तो उसे आपको 3 महीने में सेटल करना। विच आइटम विल नॉट कम अंडर द परव्यू ऑफ डेफिनेशन ऑफ गुड्स? हाँ, गुड्स क्या होते हैं? गुड्स किसे कहते हैं? बुक्स, पब्लिकेशन एंड पेरियोडिकल, दे आर नॉट काउंटेड अंडर गुड्स। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको देने वाला हूं। देखिए, डेफिनेशन ऑफ गुड्स अंडर रूल 143, गुड्स इंक्लूड ऑल आर्टिकल, कमोडिटीज, लाइव स्टॉक्स, फर्नीचर, रॉ मटेरियल, स्पेयर्स, instruments, machinery, equipment, industrial plant, vehicles, aircraft, ships, etc. are intangible products like software, technologies, transfer license, patents, or other intellectual properties purchased or acquired for the use of government, but excludes books, publication, periodicals, etc. for LFA. इस बात को ध्यान देना। ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग, ट्रेनिंग एंड मेंटेनेंस, these are all counted under goods. I hope friends it's all clear. प्रश्न क्रमांक 14 की ओर बढ़ते हैं। In case of public procurement, care should also be taken to avoid purchasing quantities in excess of requirement to avoid transportation cost, inventory carrying cost, opportunity cost, surplus cost. आंसर है इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एलटीसी एडवांस ग्रांटेड टू द गवर्नमेंट? 90% मिलता है, ये आप सभी जानते हैं। आप टिकट प्रोड्यूस कीजिए, 90% आपको मिलेगा। द अथॉरिटीज, द ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट, AMA, authorized medical attendant of a government servant is determined with reference to headquarter, to the place at which he falls ill. देखो, जिस समय पे वो बीमार होता है, तो द बी इज द आंसर। इसमें कोई चर्चा की आवश्यकता नहीं। इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट, हिज फैमिली में ट्रेवल टू द न्यू स्टेशन within 6 months after the transfer, within 1 month before the transfer, at any time after transfer, either A or B. आंसर है either A or B. Within 6 months after the transfer या within 1 month before the transfer, ये दोनों आंसर सही। above rupees 25,000 and above to rupees 5 lakhs
through the gem seller having lowest price amongst the available seller of dash different manufacturer. बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, एटलीस्ट तीन होने चाहिए. इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको मैं देना चाहूंगा. द गवर्नमेंट procuring entity purchasing goods up to rupees 25,000 from any of the registered supplier on gem above rupees 25,000 and above up to rupees 5 lakh through the gem seller having lowest price among the available seller of the at least three different government procuring entity purchase above rupees 5 lakh worth of goods through the reverse action tool from the gem registered supplier. उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा. When did the fundamental rule come into force to all government servant? बहुत ही गजब का प्रश्न. 1/1/1922, 1/1/1990, 1922 याद रखेंगे. अंतिम प्रश्न आज का दोस्तों. फॉरेन सर्विसेज में फॉरेन सर्विस means service in which a government servant devises his pay with the sanction of the government from. देखिए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूनियन टेरिटरी है, मतलब वो तो गवर्नमेंट सर्विस. आंसर है इसका एनी सोर्स अदर देन द. इसके साथ ही दोस्तों मैं आपसे विदा चाहूंगा. ये पहला सीरीज था. इस प्रकार से मैं 9 सीरीज आपके पास लेके आने वाला हूं और रोज आप इससे अभ्यास करें. धन्यवाद. आपका दिन मंगलमय.